respected panelist experts, the moderator, and the audience. All those who have joined with us in online mode and all those who are attending the summit in Indore. I welcome you all on behalf of Ataxia Awareness Society to this first of its kind event of National Ataxia Summit. It gives us immense pleasure and honor to have renowned experts of international fame from top-level medical institutes with us today to enlighten us with valuable insight about the topic ataxia today. We are feeling blessed to have here Dr.Achal Srivastava, a senior neurologist and medical researcher who heads clinical neurophysiology facility and ataxia clinic at AIIMS, New Delhi. Without further ado, I would like to introduce moderator of today's panel discussion, Dr. Anupam Gupta. Dr. Anupam Gupta is a neonatologist from Manchester, UK. He did his MBBS and MD Pediatrics from Mumbai and got trained in neonatology from Newcastle, UK, and is also a fellow of Royal College of Pediatrics and Child Health. He also has interest in research with PhD from Durham University. He is passionate about patient-focused human care, and that's why has kindly agreed to moderate the session for us today. We are grateful, Dr. Gupta, to have you here as the moderator of this panel discussion. And now I request you, Dr. Gupta, to introduce the panelists and carry forward the session. Thank you. Sorry, I said, are these homegrown trials? Because the question then comes that what is the local participation, and do you think the patients in India, they have been able to participate in these trials? They will be able to participate surely, because there is an organization, and also people who are working on ataxias have got big patient database, and they are always eager to participate. There is no hitch in participating. And do you think there has been any hindrance in terms of patient participation, in terms of the distance, India being a big country? Absolutely not. Specifically, in presence of such an organization, there is no issue of collecting the patients. In general, also the clinicians who are working on ataxia, they have got a very good and big database of ataxia patients, and they are always eager to participate. Thank you so much. We'll come back to you on yes. the all panelist discussion. Thank you once again. The next panelist is Dr. Faruq. He is a principal scientist at Institute of Genomics and Integrative Biology, which is under Council of Scientific and Industrial Research. Dr. Faruq did his MBBS from Kerala University and PhD from Neurology in AIIMS. He has worked mainly in the area of clinical genetics and genomics of hereditary ataxia. His lab runs a pan-India program, and they're focusing on the disorder of the rare diseases. He's also an associate genetic counselor. So, Dr. Faruq, thank you so much once again for joining. Can you hear us? Can I? The first question would be. Can you hear me? From what I can see, you're very heavy in terms of diagnostics, especially the DNA-based diagnosis. So I'm going to be a bit controversial here, and I'm going to ask, many people wonder this question, is that when in absence of any effective treatment, why should anybody bother for expensive DNA molecular tests? So I definitely understand the challenges which are there. Even we have the diagnosis or we do not have the diagnosis, but overall I
philosophy in mind whenever I see patients or when it is a time to counsel the patient. So it's just looking forward, and the knowledge is ever, and the new therapies are coming, tailored medicines are on their way. So unless we get to know, we get to understand the genetic spectrum of our patients, it will be a heterogeneous pool of Sorry, Dr. ataxias, right? Can you, the line is not very clear. Can you speak a bit slowly for us? The line is not clear at all. A bit slower, please. I will just try to. Am I audible now clearly? This is better. Yeah. So there is some network issue. There's heavy raining here, but don't worry. I will try to mention my point. I am just trying to say that it is really challenging even to have received the diagnosis of ataxia genetically, or maybe someone doesn't to go. Difficulty of the disease always resides with definitely the patient, and the family has to bear all the trouble of the disease and its problems. But as a like a medical personnel, and when it's a matter of counseling patients, so definitely the philosophy which works to my mind and something to give as a positive something to the patient and the family is just to look forward actually. So the things are on their way, like the tailored therapies are coming in, ASOs and different like the disease-specific therapies are on their way. So unless we establish the genetic, sorry, Dr. Faruq, I think we are still struggling. Should I come back to you later? You know, because we are still struggling to understand you. Dr. Faruq? Dr. Faruq, should we start again? फिर से बात करें? Hello, I think we lost Dr. Faruq. Okay, while we are waiting for him to come back, should we move on to Dr. Pal, Dr. Pramod Pal? Thank you once again, Dr. Pal, to join us. Dr. Pal is a professor of neurology and movement disorder and a program director of movement disorder fellowship at NIMHANS, Bangalore. He did his MD from Chandigarh and DM from NIMHANS with fellowship from Vancouver and Toronto. He has got about 390 plus publications, and he has held various posts at national and international levels. So welcome and thank you once again for joining us. Thank you. Yeah. So Dr. Pal, can I ask? Yeah. Your expertise in spinocerebellar ataxia. Yes. Are there any specific problems in SCA which are different to Friedreich's ataxia? And how do we manage them? And which problems are manageable? Okay. So I've just been back that there are problems of some. I would be using the bilingual style. So, and if you can repeat your answers in Hindi as well, that would be great. So, जो spinocerebellar ataxia है उसमें उससे स्पेसिफिक क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनको मैनेज करने के लिए क्या है और कौन प्रॉब्लम्स मैनेज की जा सकती हैं और फाइनली इसके लिए क्या रिसर्च चल रही है निमहांस में. थैंक यू.
Thank you, Dr. Gupta, and thank you, the society, for giving me the opportunity. I'll be speaking mainly in English, but I will tell something in Hindi, but my Hindi may not be grammatically correct. So, this spinocerebellar ataxia, the term medically what we use is are those ataxias which are autosomal dominant. That means parents se inherit hota hai. Okay, so these are unlike the Friedreich's ataxia, where the gene is inherited, one from the mother, one from the father, but both of them are not clinically affected. So it is autosomal recessive condition, Friedreich's ataxia, and it starts very early in life. And the Friedreich's ataxia course is much more aggressive than the SCA, what is known as spinocerebellar ataxia, which are inherited in an autosomal dominant fashion. That means a spinocerebellar ataxia mein, SCA mein, either the mother or the father definitely has a disease, though probably the disease severity may not be the same as the particular person which we are concerned. So SCA or spinocerebellar ataxia में ये जो बीमारी शुरू होता है usually at the age of 20 to 30 इसी age में शुरू होता है. But in Friedreich's ataxia it starts in the first decade, within the first 10 years. So in general, SCA or spinocerebellar ataxia prognosis is much better, and the course is also much favorable compared to the Friedreich's ataxia. But as the generation goes, first generation, second generation, third generation, ये spinocerebellar ataxia में क्या होता है? इसको कहते हैं CAG repeat disorders or repeat trinucleotide repeat disorders. So father का अगर age, it had started at the age of 50 years, the son may get at the age of 30 years, and his son, if he's affected, may get the disease at the age of say 15 years. ये इसको कहते हैं anticipation. जो जब generation बढ़ता है, अगर वो gene inherit, abnormal gene for the father or the mother inherit होता है, तो वो ज़्यादा repeat हो जाता है. मतलब repeat मतलब suppose a commonest SCA और spinocerebellar ataxia इंडिया में जो मिलता है SCA 1, 2 and 3, और certain ethnic communities में SCA 12 मिलता है. Compared to the other countries, there are SCAs about 40 to 50 SCAs are defined now, but we get mainly SCA 1, 2, 3. So a characteristic easily we can differentiate from the Friedreich's ataxia. जो spinocerebellar ataxia में होता है, gait का balance का problem होता है और बोलने का problem होता है, जो Friedreich's में भी होता है. But कुछ ataxia में like spinocerebellar ataxia type 2 जो बहुत frequent है, उसमें eye movement का abnormality होता है. वो देखने में अगर patient, हम लोग normal person को कुछ side से लेफ्ट की राइट साइड से बुलाता है तो हम लोग आंखों घुमा के देख सकते हैं. ये spinocerebellar ataxia मेनली टाइप 2 में आंखों घुमा के देखने में प्रॉब्लम होते हैं. इसको कहते हैं जो स्लो saccades है. So eye movement abnormality is one of the classical problems apart from ataxia, and also they develop neuropathy in the legs. Similarly, SCA3 जो spinocerebellar type 3 जो डिसेंट एक्चुअली जो ऑरिजिन होता है प्रॉब्ली पोर्टुगीज उधर से आया था इंडिया में, उसके में डिस्टोनिया करके ट्विस्टिंग ऑफ द हैंड्स लेग्स इस ज्यादा होता है अपार्ट फ्रॉम द ataxia. So and these are very common things in this 1, 2, 3. And another one, spinocerebellar type 12, only 4 ataxias I am going to tell. The spinocerebellar type 12 SCA 12 ये certain ethnic communities में होता है. इसमें ज्यादा हैंड शेकिंग ऐसे होता है, बाद में चलने का प्रॉब्लम, बोलने का प्रॉब्लम होता है. और इसके एज ऑफ ऑनसेट जो शुरू होता है अराउंड द 40s में शुरू होता है, बट जनरेशन के बाद अर्ली हो सकता है. तो इन जनरल मैनेजमेंट के लिए ये 3-4 अटैक्सिया है, इसमें हम लोग सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं. अगर बहुत शेकिंग होता है तो उसको क्लोनाजिपाम, प्रोप्रानोल, ऑल दिस टैबलेट्स हम देते हैं, जिसमें शेकिंग टेम्पोरली बंद होता है, थोड़ा सा कम होता है. Most important thing, we advise the patient. There is no specific treatment for any of these ataxias. There is no curative treatment as of now. Nothing like stem cells, etc. First, day से हम लोग जो advise करते हैं इन ataxia को, एक balance, gait and balance first assess करके उसको exercise करना है. तो exercise जो balance के लिए होता है, different type of stepping exercise, ball के ऊपर exercise. So what I classically tell the patients is that suppose we are born with say 100 nerve cells in the cerebellum. The cerebellum is the main problem. अगर 50 भी चला गया because of this problem of the genetics, जो बाकी 50 है उसमें हम लोग एक्सरसाइज करके उसको स्टिमुलेट करके इंप्रूव कर सकते हैं, उसका फंक्शन इंप्रूव कर सकते हैं. जो डॉर्मेंट सेल्स है
उसको function improve कर सकता है. So definitely exercise, balance and gait exercise will help to, either stabilize in the initial stages, or it can reduce the progression of this disease, which is very slowly progressive. Second thing is that we also advise the patient to have speech therapy, and बाद में in the later stages swallowing problem होता है, उसके लिए swallowing problem assess करने होता है. And the most important thing is that you should try to reduce the weight if you are overweight, because full upper part of the body legs के ऊपर पड़ते हैं, so leg जितना हो सकता है weight कम करना है. So they are the 4 or 5 basic things we tell. Some ataxias can have, Parkinsonism, like half shaking होता है, एकदम like SCA2, जो spinal stavasa type 2, उसमें जैसे लगता है Parkinson disease है. So कभी-कभी इसमें जो Parkinson disease के लिए दवाई देता है, like amantadine और levodopa, carbidopa, ये थोड़ा सा help कर सकता है. जो SCA3 में dystonia होता है, उसमें भी थोड़ा बोटॉक्स इंजेक्शन दे, बोटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन देके, नहीं तो मेडिसिन जो डिस्टोनिया के लिए होता है उस देके थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं. सो डेफिनेटली देयर इज स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट विद different types of medicine according to the type of symptoms the patient has, apart from the ataxia. And कुछ ataxias, SCAs, spinal cord ataxia में आंखों में प्रॉब्लम होता है, देखने में प्रॉब्लम होता है, नाइट में प्रॉब्लम होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ऑप्टिक एट्रोफी होता है, किसी ataxia में cognition मतलब dementia type का होता है, though dementia is not very common in SCA, spinal cord ataxia. So this is the in nutshell what we practice. In NIMHANS, again we do a very good physiotherapy, balance and gait exercise करते हैं. इसमें I'll just tell you one more thing, that I had an experience of treating all this, not treating, taking care of these patients with Ayurvedic treatment, because there is no specific treatment for this, and we had done a control study with our Ayurveda colleagues, because we do not have oral medicines. They have given physiotherapy, massage therapy. There could be some improvement, because these are all a pathway through the exercise which increases the brain factors, brain derived neurotrophic factors, etc. So इसमें थोड़ा सा improvement हो सकता है. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Pal. ये काफी आपका डिटेल आंसर था, और ऑब्वियसली इसके बारे में और चर्चा करेंगे जब हम पैनल डिस्कशन कर रहे होंगे, बट दैट वाज अ वेरी वंडरफुल आंसर. थैंक यू. So moving on to Dr. Muthyala, can you hear us? Yes, please. I can hear you. So thank you once again, sir, for joining. Dr. Muthyala is a president and chief executive of Indian Organization of Rare Diseases. This is a non-profit umbrella organization representing about 7,000 rare disease patients and their families. He is also a member of rare diseases of various international organizations at Asia Pacific, Europe, and US level as well. But this is all is in his voluntary capacity, where he is by vocation he is a professor in the Department of Experimental Clinical Pharmacology in University of Minnesota, USA. His current research interests are developing therapeutics of rare diseases, which includes ataxia. So welcome once again, Dr. Muthyala. Can I ask what is the national policy on rare diseases, and where does the ataxia stand in that? And we are talking about the Indian context. Thank you for the opportunity to talk about it. I think in terms of talking about the national policy, I refer to Dr. Verma, who is the author of the policy written in 2017. So I defer that question to Dr. Sharma to answer that. As far as the policy is concerned, I think there is still a lot more to be done. At this time, I think I leave it that way. Let Dr. Verma-ji answer that question, please. So what you're saying is that ataxia is not included in the rare diseases. Is that correct to say? Yes, that is correct. And what steps have been taken to do that? Can we ask? Yes, you can. As I said earlier, when the Mahapita Verma-ji is here for that thing.
So again, I refer to that question to him, why it was not included. And this question was asked to me as a representative of all rare diseases. People ask me, why not my disease not included in it? What should I answer to them? There are 7,000 of them. Which one is preferred? Which one is not preferred? Who is supposed to ask that question? I leave these questions rather than answers to you. So also, just for our knowledge, what are the benefits of any disease getting included in the rare diseases charter? I'm So, sorry. So once a disease has been included in rare diseases, what is the benefit patients tend to get? I suppose that, whether the ataxia or any other disease is included in it, the benefit is either financial or social or any other advantage, benefits that should get. Our vision, in one word, we want all rare disease patients should have equal opportunities, just like any person with a common disease. That is our goal. That is our mission. Also, finally, can you tell us about the Orphan Drug Act and does it exist in India? Unfortunately, it does not exist at this time. We have made several requests to the government of India, but there is I must make it clear that the Orphan Drug Act in the US is not applicable in India. Here is the reason. Orphan Drug Act is only for the new drugs, not for the drugs which are being manufactured in India. At this time, how many new drugs are discovered in India? I'm not sure. So unless the new drugs are involved, we cannot have the Orphan Drug Act similar to the United States. However, being the generic drug companies, we should have our own Orphan Drug Act just specific to India. That's what we have made a request to the Ministry of Health to have a separate office for the orphan drug, orphan product development office in under CDSCO or Ministry of Health. As I am told that is being considered at this time. I don't know when it is going to happen, but we are making all efforts to make that happen, because without a office, it's very difficult to recognition of the rare diseases. If you ask any questions to the Ministry of Health, they don't know who is going to answer that question. At least if there is a place where one can put the question directly to that person, that is a very, very possibility that you can get the answer. Whether right or wrong, that's a different story. But we must have an office for orphan product development under CDSCO or Ministry of Health or Niti Aayog, whoever that is. We have made this request, and fortunately, we had discussions with the Ministry Secretary in the Ministry of Health, and they said that they are going to consider, but I'm not sure where it is at this time. We are still fighting for it. Thank you, Dr. Muthyala. Thank you. So, Dr. Faruq, are you back? Can we come back to you? Yes. Yeah. Can you hear me now clearly? Yeah, this is much better. No, sorry. Actually, the previous, I was in a bad connectivity area and it is heavily raining here. So, is the reason for the connection. So, you may ask your question. Sorry. Yeah. So, basically, हम लोग पूछ रहे थे कि डीएनए डायग्नोसिस जो अटैक्सिया पेशेंट्स का है, वो उसका क्या रोल है in terms of management and disease progression, and मतलब उसका ओवरऑल पेशेंट मैनेजमेंट में कहाँ फिट बैठता है वो? नहीं, मैं समझता हूँ कि अक्सर जब मैं भी मेरे पीएचडी टाइम में जब पेशेंट से बात करता था, तो पहला सवाल यही होता था कि अगर हमारा ये जेनेटिक इन्वेस्टिगेशन से अगर डायग्नोसिस का पता चल भी जाता है तो उनको क्या एडवांटेज मिलने वाला है, या उनको अगर वो नहीं कराए तो उनको क्या डिसएडवांटेज होने वाला है. तो ओवरऑल जेनेटिक टेस्टिंग का जो महत्व है वो काफी ज्यादा है. पहली बात कि हमें आज हमारा जो विज्ञान है, मेडिकल साइंस का या किसी भी
क्षेत्र का, तो ये सब प्रॉपर रिसर्च और साइंस के माध्यम से हुआ है। साइंटिस्टों की मेहनत, डॉक्टर्स के ये मुकाम अभी तक हासिल किया है। तो मुझे लगता है कि ये भी जेनेटिक इन्वेस्टिगेशन को बिल्कुल सिर्फ एक डायग्नोस्टिक टेस्ट की तरह नहीं, एक साइंस की तरह लेना चाहिए। और जहां तक मैं समझता हूँ कि आज की डेट में कि इनके जेनेटिक डीएनए बीमारियों का इलाज ऑलमोस्ट मोर देन 90% बीमारियों का इलाज नहीं है, एक्सेप्ट जहाँ पे एंजाइम रिप्लेसमेंट या कोई अभी नई थेरेपीज आ रही है। ये इसी वजह से आ रही है कि उनकी जेनेटिक डायग्नोसिस के बारे में हमें पता है। अगर एक बार सोच के देखिए कि जितने अटैक्सियाज है, अगर इनका जेनेटिक डायग्नोसिस नहीं होता है तो हमारे लिए क्या होगा? ये सब एक अटैक्सिया के मरीज होंगे विदाउट कोई डिवीजन कि ये इस प्रकार का अटैक्सिया है, ये उस प्रकार का है, या एक बार शुरू होने के पश्चात ये क्या सब सेम ही स्पीड से प्रोग्रेस करेंगे या इनका अलग अलग प्रोग्रेशन हो सकता है, अलग अलग सिवियरिटी हो सकता है। बहुत सारे और भी क्वेश्चंस होते हैं जो कि पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं, डॉक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरी होता है। और एज वी से कि मैनेजमेंट में पहला पार्ट डायग्नोसिस होता है, तो डेफिनेटली जेनेटिक डायग्नोसिस का और इन्वेस्टिगेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो मैं समझता हूँ कि शायद मैंने आपका सवाल का जवाब दिया है। थैंक यू डॉक्टर फरूक। ऐसे कोई जब डीएनए टेस्टिंग करते हैं तो इसमें ऐसा इंटरप्रिटेशन हो सकता है जिससे पता चले कि उससे प्रेडिक्ट किया जा सके कि प्रोग्रेशन जो डिसीज का है, बिकॉज ये जो अटैक्सिया डिसीज होती है सब में प्रोग्रेस होती है, तो इससे प्रोग्रेशन प्रेडिक्ट किया सकता है क्या? कैन वी प्रेडिक्ट द प्रोग्रेशन ऑफ अटैक्सिया बाय टेस्टिंग और डीएनए टेस्टिंग? डीएनए टेस्टिंग हमें ये हेल्प करने में मदद करता है कि ये कौन सा प्रकार का जेनेटिक डिफेक्ट है, और उस पर्टिकुलर जेनेटिक डिफेक्ट की नेचुरल हिस्ट्री का डेटा देखते हुए और समझते हुए हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये जनरली उसका नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब नेक्स्ट जो कोर्स होगा डिजीज का वो किस प्रकार का होगा। तो इस तरह से नेचुरल हिस्ट्री के डेटा सेट से डेफिनेटली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बायोलॉजी कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल ऐसे मैथमेटिकल फॉर्मूला की तरह नहीं काम करता है, काम करता भी है, लेकिन है कि वो साइंस को और समझने की जरूरत है। तो लगातार रिसर्च और ये साइंस और विज्ञान के माध्यम से शायद हमें और उसमें मतलब चीजों को पहचानने और समझने में मदद मिल सकती है अगर हम ये इन्वेस्टिगेशन करें। सिर्फ डायग्नोस्टिक्स ही नहीं, मैं कहता हूँ उसके बियॉन्ड हमें रिसर्च की भी आवश्यकता है, और हमें बहुत डीप रिसर्च की आवश्यकता है। हमारे यहाँ पे इंडिया में हमारी पॉपुलेशन का साइज देखिए और उसके हिसाब से आप रेयर डिजीज, किसी भी डिजीज का प्रिवेलेंस का डेटा देखिए 1 in 50,000। नाउ आप इसी लाइक पॉइंट को अगर आप हमारे पॉपुलेशन के डिनोमिनेटर से कैलकुलेट कीजिए कि टोटल नंबर ऑफ पेशेंट कितने होंगे, तो हमारे पास बहुत ज्यादा बर्डन है और हमें उनको टैप करने की जरूरत है। रिसर्च का रिसोर्स हमारे पास है, तो हमें लगता है कि हम वर्ल्ड ओवर वी कैन लीड इन दिस एरिया, पर्टिकुलरली जहाँ जेनेटिक रिसर्च की बात आती है। थैंक यू डॉक्टर फारूक। मुझे थोड़ा सा इंटरप्ट करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि अभी मुझे बताया गया कि डॉक्टर श्रीवास्तव जो है वो मीटिंग 6 बजे के बाद नहीं अटेंड कर पाएंगे, तो जो थोड़े से कपल ऑफ क्वेश्चंस थे मैं उनसे वापस करूंगा, एंड देन आई विल कम बैक टू यू। सॉरी फॉर दैट। तो डॉक्टर श्रीवास्तव, जी जी बिल्कुल, जो मेन अभी पॉइंट ऑफ कंटेंशन है वो ये है कि एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट क्या है। तो एटेक्सिया के एरिया में काफी सारी चीजें आती हैं, काफी लोग हियर से भी है, ट्रायल भी है, जैसा एक हमारे पैनलिस्ट डेलीगेट ने पूछा है कि आयुर्वेदिक का भी है। तो आपके एक्सपीरियंस में व्हाट इज द एविडेंस बेस्ड जो है, जो कि ताकि पेशेंट जो है बार बार घूमना बंद कर दें और साइंस की सुने, तो आप इस बारे में क्या शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस और नॉलेज? सॉरी, आप म्यूट पे हैं। आप हेलो, यू आर स्टिल, या थैंक यू। कैन यू प्लीज रीस्टार्ट? या हाँ, नहीं वो आप लोगों की तरफ से म्यूट होता है, इधर से हम लोग नहीं कर रहे। अच्छा, तो इस समय अभी जो सबसे अच्छा एविडेंस है, डॉक्टर पाल सर ने भी आप लोगों को बताया था, सबसे अच्छा एविडेंस जो है वो है फिजियोथेरेपी का। तो इसके अलावा दवाओं की अगर हम बात करें तो कोई दवा ऐसी नहीं है जो आप सोचिए कि इम्बैलेंस को ठीक कर पाए, या
कुछ दवाएं होती है ट्रेमर कुछ कम कर देंगी, लेकिन इम्बैलेंस वापस नॉर्मल ला देगी, ऐसी दवाएं फिलहाल मौजूद नहीं है। दो अन्य चीजें हैं, एक रिलुजॉल की बात है और दूसरी बात यह है कि स्टेम सेल्स की। तो अभी स्टेम सेल्स का एक हम लोगों ने पेपर पब्लिश किया था, और हमारा ट्रायल नहीं है, ट्रायल दूसरे लोगों का, उसको उन्होंने कंपाइल करके पब्लिश किया था। तो अभी ऐसा नहीं है कि स्टेम सेल देने से लोग ठीक होने लगेंगे, इतना एविडेंस नहीं है। दूसरी चीज ये है, रिलिजॉल की जहां तक बात है, उसका ट्रायल वो इस तरह का ट्रायल था कि बड़ा ही मिक्स टाइप के ग्रुप में किया गया था, तो वो भी कोई इतना बड़ा एविडेंस नहीं देता कि हम लोग लोगों को देना शुरू कर दें और लोग ठीक होने लगेंगे। तो अभी अगर आप कहें कि कोई बहुत अच्छा एविडेंस मौजूद है किन्हीं दवाओं के लिए, तो अभी ऐसा नहीं है। और जरूर हम लोग भी लुकआउट पे रहते हैं, कोई ना कोई ऐसी चीज हो जिससे कि अटेक्सिया के इतने सारे मरीज, चूंकि अब बहुत सारे देख चुके हैं, और फारूक काफी समय तक मेरे साथ ही काम किए थे, उन्होंने भी मरीजों के दुख को समझा है उस समय। तो ये बात वही है कि अभी फिलहाल बहुत मरीजों को सहायता पहुंचा सकने की स्थिति में हम लोग है नहीं। कुछ सिम्टम्स पे जरूर एक्शन होता है, कुछ फायदा हो जाता है शुरुआत के दौर में, जैसा कि डॉक्टर प्रमोद पाल सर ने बताया था कि कुछ सिम्टम्स पे हम लोग एक्ट कर सकते हैं कुछ तरह से, कुछ दवाओं की सहायता से, किसी किसी में बोtulinum टॉक्सिन की सहायता से, पर ये कि रिवर्स हो जाएगा डिजीज, ऐसा नहीं है। थैंक यू। तो आपके लिए जो हमारे डेलीगेट्स हैं, पेशेंट्स हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा इन टर्म्स ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड रिसर्च? बिल्कुल, क्योंकि इस पे रिसर्च ऑलरेडी जारी है। सबसे बड़ी बात कि कहीं पे एनरोल रहना आवश्यक है, जिससे पता रहता है कि हाँ ये लोग मरीज हैं और ये मौजूद हैं। कल किसी ट्रायल की शुरुआत होती है तो हम लोग इमीडिएटली बुला लेंगे। अब जितने लोग संपर्क में हैं उनको हम लोग जरूर बुलाएंगे जैसे ही हमें किसी ट्रायल के लिए शुरुआत करनी होगी। तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं एनरोल्ड रहें। और दूसरी बात, इस तरह से जैसे आप मीटिंग अभी आज कर रहे हैं, इस तरह से होती रहती है तो लोग जो अभी अपडेटेड क्या स्थिति है वो सबको जानकारी होती रहती है, और सभी लोग उस प्रकार से तैयार रहेंगे कि आज जरूरत पड़ गई है, अब हम ट्रायल में एनरोल हो सकते हैं। थैंक यू। फाइनली आपने बताया कि आपके पास एक डेटाबेस है, तो उसमें जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कितने पेशेंट्स हैं जो आपके डेटाबेस में है, और उसमें क्या ब्रेकअप है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेशेंट्स का? करीब करीब 5,000 मरीज है। मेरा और डॉक्टर फारूक का डेटाबेस कॉमन ही है। अभी वो डिटेल में आपको बता देंगे क्योंकि मैं 6 बजने वाला है, मैं निकलूंगा अभी। करीब करीब 6,000 पेशेंट हैं उसमें, और मैं समझता हूँ अराउंड 2,000 के आसपास है जो एक्चुअली आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। टाइप 12 और टाइप 2 जो है वो सबसे कॉमन है, और उसके अलावा फिर टाइप 1 और फिर टाइप 3, टाइप 7 भी कुछ मरीज मिले हम लोगों को। तो इस तरह से बाकी कुछ कुछ एक एक दो मरीज टाइप 28 दिस दैट, ये सब जो कि बहुत रेयर एंटिटीज हैं वो सभी मिले हैं। और फ्रेडरिक्स ऑफ कोर्स करीब मेरे ख्याल से 300 मरीज होंगे फ्रेडरिक्स के। और इनका इन पेशेंट्स के डायग्नोसिस और डिस्ट्रीब्यूशन से कोई पैटर्न इमर्ज करता है क्या? पैटर्न किसी एक पर्टिकुलर प्रकार का एरिया में पैटर्न है कि क्योंकि बहुत सारे सेंटर्स पे काम हो रहा है, एक खास पैटर्न ये है कि उत्तर भारत में अगर देखा जाए तो टाइप 2 और टाइप 12 बहुत ज्यादा मरीज है। दक्षिण भारत की बात करें, डॉक्टर प्रमोद पाल सर की तरफ की बात करें, उधर टाइप 1 ज्यादा मिलता है, टाइप 2 टाइप 3 भी काफी मिलता है। इधर टाइप 3 उतना कॉमन नहीं है, टाइप 2 एंड टाइप 12 बहुत कॉमन है इधर। और इसी तरह का पैटर्न जो है, अब ईस्टर्न इंडिया की बात करें तो उधर भी टाइप 2 और टाइप 12 ज्यादा कॉमन है। तो थोड़ा सा वेरिएशन है भारत के अगर हम बात करें तो अलग अलग एरियाज में। थैंक यू। आई थिंक इट्स 1:06. So thank you for your participation. Thank I you. think we'll get back to you. Yeah, Yes, thank you everyone. मैं फिर जस्ट पार्टिसिपेट करूंगा अगर पहले खत्म हो गई अगली मीटिंग। थैंक यू। Thank you once again. Dr. Faruq. So next question आपसे ये है कि चूंकि आपका एक्सपर्टीज इसमें है, डीएनए और जेनेटिक स्टडीज में है, इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग और क्रिस्पर थ्योरी का क्या रोल है? आप थोड़ा सा एक लेमन की लैंग्वेज में ये हमारे ऑडियंस को एक्सप्लेन करेंगे? आप सॉरी, यू हैव टू अनम्यूट। या आपने अनम्यूट कर दिया जी, शुक्रिया। तो जो आपने क्रिस्पर के बारे में बात किया है, तो अभी तक इस क्षेत्र में अभी तक जो भी काम हुआ है
इसमें हम इस प्रकार से करते हैं कि जो जेनेटिक डिफेक्ट होता है, जो जेनेटिक विकार होता है, उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली भी पॉसिबल होता है। हम डिशेज में जो सेल्स होती है उसको डेफिनेटली हम मॉडिफाई कर पाते हैं। हमने खुद फ्रीड्रिक अटैक्सिया का जो जीन डिफेक्ट है, हमने पेशेंट के ब्लड सेल लेके उसको आईपीएससी में कन्वर्ट किया है, और उन आईपीएससी में हमने देखा है कि वो जो जेनेटिक डिफेक्ट होता है जीए रिपीट्स का, तो उसको हमने क्रिस्पर के माध्यम से उसको कट किया गया है। तो कट करके उसको हम चाहे तो नॉर्मल जीए रिपीट से भी जो उसका जो म्यूटेशन होता है, तो फ्रीड्रिक अटैक्सिया में क्या होता है कि न्यूक्लियोटाइड होते हैं बेसिस G AA के, तो वो जो रिपीट, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं 3 न्यूक्लियोटाइड, ये बहुत बार रिपीटेड होते हैं, कम से कम 1000 बार इन मरीजों में, और नॉर्मली वो 10 से 20 के बीच में होते हैं। तो ऐसा पॉसिबल है कि वो जो जीए का जो स्ट्रेच होता है हमारे डीएनए के अंदर, उनको दोनों साइड से कट करके हम उसको एक नॉर्मल जो लेंथ होता है, जो नॉर्मल 10 या 20 रिपीट होता है, उससे रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो डेफिनेटली थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली डिशेज में पॉसिबल होता है। साइंस के लिए, रिसर्च के लिए ये काफी कारगर है। हमें बहुत मदद मिलती है इस क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से चीजों को समझने में, बीमारी की वजह जानने में, बीमारी किस तरह से न्यूरॉन्स को डैमेज करती है उसको पता करने में। लेकिन अभी थेरेप्यूटिक उसका जो पर्सपेक्टिव है वो शायद अभी और रिसर्च चल रहा है। तो यही ये फ्यूचर थेरेपीज है, किसी न किसी माध्यम से ये एक तरह से कह सकते हो कि डीएनए सर्जरीज है, और आई थिंक इनका पोटेंशियल है फ्यूचर में काफी। तो जैसे जैसे और हमारे पास टूल्स अवेलेबल होंगे, तो मैं समझता हूँ कि शायद ये जीन लेवल पे ही हम इन विकारों को टैकल कर पाए, अन्यथा और भी तरह की जो चीजें हैं उनका रोल रहेगा नए दवाइयाँ डेवलप करने के लिए। Thank you. Next is what is the utility of knowing the diagnosis in carrier stage? So कुछ पेशेंट जो होते हैं जो कैरियर भी होते हैं, तो उनका क्या फायदा है अगर ये डायग्नोसिस किया जाए उनका? तो इसमें 2 प्रकार का क्वेश्चन है। जब आप कैरियर स्क्रीनिंग की बात कर रहे होते हैं, तो ये जनरल आमतौर पे हम जो रेसेसिव अनुवांशिक बीमारियां होती है, मतलब 2 प्रकार की होती है, डोमिनेंट और रेसेसिव। तो रेसेसिव विकार में जो जीन की दोनों कॉपी होती है वो दोनों खराब होती है, और कैरियर वो लोग होते हैं जिसमें एक कॉपी खराब रहती है, उनमें बीमारी लाइफ टाइम में नहीं होता है अक्सर। डोमिनेंट बीमारियों में आपका 2 कॉपी में से एक भी कॉपी अगर डिफेक्टिव होता है, तो वो काफी है कि बीमारी अकेले, वो एक ही कॉपी का डिफेक्ट बीमारी पैदा कर सकता है लाइफ टाइम में। तो जब हम बात कर रहे होते हैं डोमिनेंट डिजीज के कैरियर्स की, तो शायद हम बात कर रहे हैं कि बीमारी क्योंकि उनमें एक उम्र के बाद पैदा होती है, तो उस उम्र जब बीमारी पैदा होने का अंदेशा है, उससे पहले अगर हम टेस्टिंग करते हैं, तो उनको उससे क्या फायदा हो सकता है? डेफिनेटली ये फायदा तो नहीं है कि उनके बीमारी जो जब होगी, जिस एज में जब प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एज एट ऑनसेट की बात करते हैं, तो उसको हम कुछ डिले कर दे या वो नहीं हो, ऐसा अभी हमारे पास कोई उपाय नहीं है। डेफिनेटली ये हेल्प जरूर करता है कई बार प्लानिंग करने में, लाइफ के गोल्स सेट करने में, फैमिली प्लानिंग में हेल्प करता है। आजकल प्रीनेटल टेस्टिंग और इन सब का भी आजकल काफी मेडिकल में क्षेत्र ये आगे बढ़ चुका है। तो आई थिंक इन सब चीजों में जरूर हेल्प करेगा ये जेनेटिक डायग्नोसिस, अगर हम उनको कैरियर के स्टेज पे ही हम पता कर लेते हो। और जो पेशेंट भी है, अगर उनके भी अगर कोई प्रेगनेंसी या उस तरह के इश्यूज है, तो उनको भी हम ये लाइक ये प्रीनेटल डायग्नोसिस के माध्यम से हम पता कर सकते हैं। Thank you. So after all of this grilling, I think we can open the floor to general discussion. Basically, we would be going through the different stages. So basically, symptoms, possible treatments, and finally living with ataxia or rehabilitation. And then all the panelists can chip in, depending upon your experience, and we would obviously like to benefit from your expertise and experience. तो मैं अभी ये जो क्वेश्चंस हैं सारे पैनलिस्ट के लिए बोल रहा हूँ। तो पहला टॉपिक जो होगा वो सिम्टम्स रिलीफ होगा। तो आप लोगों का उस बारे में क्या एक्सपीरियंस है? मतलब
काफी अलग अलग तरीके के सिम्टम्स होते हैं पेशेंट्स को। उसमें डोमिनेंट सिम्टम किसी कुछ को होता है ट्रेमर्स। तो कौन से स्ट्रेटेजीज ट्रेमर्स को डील करने में इफेक्टिव आपने पाए हैं? Dr. Gupta, may I interrupt here? Dr. I.C. Verma is wanting to speak something about it. He is writing in chat. So can you allow him to speak? Yeah, sure. So question is the tremors. So basically we are talking about the symptom resolution. मतलब symptoms के जो problems होते हैं वो, क्योंकि ataxia में there is no cure, तो इसमें symptom based treatment होता है। तो we have had different questions from delegates as well as the family members कि what is the best evidence based or the experience based modalities for different symptoms। तो पहला symptom जो मैं बात कर रहा हूँ वो tremors का है। कंपकपी जो होती है पेशेंट्स को, सबसे अच्छा उसके लिए स्ट्रेटेजी क्या है? Anybody can answer this? Okay. Dr. Pal? गुप्ता साहब, मैं एक बात करना चाहता हूँ। नंबर 1 इज डायग्नोसिस। डायग्नोसिस डीएनए बहुत जरूरी है, क्योंकि द फर्स्ट स्टेप टू एनीथिंग, वेदर यू आर फिट फॉर अ ट्रायल, व्हाट ट्रीटमेंट इज सुटेबल फॉर यू, बेस्ड ऑन ट्रीटमेंट, बेस्ड ऑन डायग्नोसिस। ये जो इतने टाइप के हैं, हर का ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा, सबका ट्रीटमेंट एक नहीं होगा। सिम्टम तो एक ही है, लेकिन अटैक्सिया, लेकिन इसके कारण से ट्रीटमेंट जो है इज डिपेंड ऑन द कॉज, एंड द कॉज इज डिफरेंट फॉर ईच ऑफ देम। सो यू हैव टू नो व्हाट इज द कॉज। जो SCA12 है, इंडिया में सबसे पहला पेशेंट मैंने डायग्नोज किया था। ये एक फैमिली थी शिमला में, जिनमें 25-30 लोगों को बीमारी थी। वो डॉक्टर मेरे पास आया कि डॉक्टर साहब, हमारी फैमिली में ये इतने लोगों को है प्रॉब्लम, लेकिन आप हमारी मदद कीजिए। तब मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में था, तो तब उसका SCA12 आइडेंटिफाई भी नहीं हुआ था। तो हमने सारे ब्लड कलेक्ट किए और फिर डायग्नोज, जब ये इलाज निकला, ट्रीटमेंट निकला, आई मीन कॉज पता लगा, डॉक्टर होम्स जॉन्स हॉपकिंस में थे, तब फिर इनको डायग्नोज किया। तो ये SCA12, जो अग्रवाल फैमिलीज हैं, इसमें मोस्टली SCA12 भी होता है जब हम टेस्ट करते हैं, लेकिन टेस्ट करना चाहिए। नंबर 1 पे पता लग जाता है। जो ट्रिपलेट रिपीट है, कितने रिपीट हैं, वो आपको आइडिया देता है कि आपकी बीमारी कितनी सीवियर होगी, कम होगी, कितनी उम्र में होगी, कुछ आइडिया मिलता है। नंबर 3, इट हेल्प्स इन प्लानिंग ऑफ योर फैमिली। देयर आर मेनी पीपल हु वांट कि भाई हमको तो बीमारी हो गई, लेकिन आगे ना जाए, आगे हमारे बच्चों को ना हो। तो और जो बच्चे हो गए, उनको वो पता करना चाहते हैं, भाई मेरे बच्चों को तो नहीं है, क्योंकि बीमारी तो बाद में आती है 30-40 साल पे, लेकिन वो उनकी शादी हो गई 20 साल में, तो 25 साल में वो सोचता है यार पता नहीं मेरे में खराब जीन है या अच्छा जीन है। तो कई लोग चाहते हैं कि भाई मुझे अपना नहीं पता करना, लेकिन मेरा जो बच्चा है, मेरी वाइफ के पेट में, उसका टेस्ट कर दो कि उसमें बीमारी ना हो। तो ये बहुत जरूरी है। द ट्रायल का प्रॉब्लम है, इंडिया में रियली कोई ट्रायल नहीं हो रहा। ये सब USA में या यूरोप में है, लेकिन इंडिया वो लोगों को वो नहीं लेते, क्योंकि वो चाहते हैं कि वहां रोग रहता हो, ताकि उनको घड़ी मुड़ी वो टेस्ट कर पाए। ये प्रॉब्लम है। ऑर्फन ड्रग एक्ट ये है कि कर्नाटका यूनिवर्सिटी स्टेट है जिसमें कुछ मूवमेंट हुई है, उन्होंने ये कुछ प्लान बनाया, लेकिन कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मानती है कि होना चाहिए, लेकिन अभी तक कुछ प्रैक्टिकल टर्म्स में कुछ नहीं हुआ। द थर्ड क्वेश्चन जो रेज हुआ फॉर रेयर डिजीज पॉलिसी, तो रेयर डिजीज पॉलिसी जब बनी थी, इट वाज मोर फॉर ट्रीटेबल डिजीजेस, कि यार जो ट्रीटमेंट है वो लोगों को किस तरीके से पहुंचाए जाए। जो बीमारी का इलाज ही नहीं था, उन पर ज्यादा डिस्कशन नहीं हुई, लेकिन SCA अटैक्सिया एक्सक्लूडेड नहीं है। अगर वो लिस्ट में नाम भी हो, अगर इसका इलाज निकल आए और आप लिखोगे तो आपका SCA को वो इंक्लूड कर लेंगे, लेकिन जब इसका इलाज ही नहीं है, क्योंकि ये जो पॉलिसी है, ऑल्दो एक एलिमेंट है कि रिसर्च की जाए, बट द फोकस इज मोर ऑन ब्रिंगिंग ट्रीटमेंट। तो इन्होंने 3 किस्म के ट्रीटमेंट किए। एक ट्रीटमेंट आइडेंटिफाई किया कि बीमारी होती है
कि उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दो, लिवर ट्रांसप्लांट कर दो और वो इलाज हो जाए। तो इसका एक टाइम खर्चा गवर्नमेंट हैज एग्रीड टू गिव अप टू 50 lakhs ताकि बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो जाए। कई जेनेटिक बीमारियां जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट से ठीक हो जाती हैं, किडनी ट्रांसप्लांट से ठीक हो जाती हैं। सेकंड टाइप की बीमारियां हैं जो दवाई लेने से ठीक हो जाती हैं और वो दवाइयां इतनी महंगी नहीं हैं लेकिन लेनी पड़ती हैं लंबी, तो वो भी गवर्नमेंट ने कहा कि हम कवर करेंगे। द थर्ड जो दवाइयां हैं जो बहुत महंगी हैं, ये जो लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर, अभी ये जो SCA वगैरह इनका कोई इलाज निकला नहीं है, लेकिन मेरी उम्मीद है वॉचिंग के जो ट्रायल हो रहे हैं USA में ऑन फ्रीडिक अटैक्सिया, इसका शायद कुछ इलाज निकलेगा क्योंकि इसमें आयरन मेटाबॉलिज्म एंड ऑक्सीजन रेडिकल ज्यादा होते हैं। तो देयर आर सम नई ड्राइव्स आई हैं ताकि वो ऑक्सीजन को प्रिवेंट कर सकें, एक्स्ट्रा रेडिकल को। तो आई थिंक उसमें इलाज निकलने की उम्मीद है क्योंकि वो ट्रायल चल रहे हैं। ये SCA-12 जो है, जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी कोई बहुत ज्यादा, ये फिजियोथेरेपी एंड ट्रेनिंग, मेकिंग द हाउस में चीजें ऐसी हों कि आप गिरिए मार, खाने में कोई गर्म चीज ना गिरे आप पे, तो ये चीजें भी करें। लेकिन कई, अभी मैं तो ट्रीटमेंट न्यूरोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं तो जेनेटिस्ट हूँ, लेकिन मेरे लोगों से बातें होती रहती हैं और कहते हैं कि एक डीप, कोई जो न्यूरोलॉजिस्ट है डॉक्टर पॉल, वो कमेंट कर सकते हैं कि ये जो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन है, मेरा एक पेशेंट था USA में, उसने कहा कि मेरा डीप ब्रेन स्टिमुलेशन से मेरे को फर्क पड़ा। तो आई थिंक दे शुड टेल डॉक्टर पॉल कैन कमेंट ऑन दिस कि इन्होंने कोई डीप ब्रेन स्टिमुलेशन ट्राई की या नहीं की। डॉक्टर होम्स जो है वो सजेस्ट करता है, एक मेरा पेशेंट था जो उसके पास गया इलाज कराने, तो उसने कहा कि कोएंजाइम क्यू हाई डोज में लो, तो हाई डोज से लेने से उसको फर्क पड़ा लेकिन उसके साइड इफेक्ट होने लग गए। तो ये जो डॉक्टर्स हैं ट्रीट करने वाले, वो जो आपके लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं अबाउट सिम्टम कि उनका क्या करना चाहिए, दे आर बेटर एबल टू आंसर देम, बट सर्टेनली DNA टेस्ट मस्ट बी डन, द पॉलिसी विल कवर ataxias provided some treatment comes। अब ट्रीटमेंट ही नहीं है तो वो क्या कवर करे। एंड ऑर्फन ड्रग एक्ट गवर्नमेंट तो करिए हम करेंगे, बट गवर्नमेंट का जो सिस्टम है मूव्स वेरी स्लोली। लेकिन कर्नाटका में कुछ हुआ, कर्नाटका गवर्नमेंट ने कुछ बनाए हैं। इनफैक्ट सम पेशेंट जो LSD के हैं, गॉशे डिजीज एंड नीमेनपिक डिजीज, इनका कुछ का इलाज भी गवर्नमेंट फ्री कर रही है जो खर्चा लाखों में होता है। सो आई होप दिस विल आंसर some of the questions that have been raised. Yeah. Thank you so much, Dr. Verma, for your contribution. That's very useful knowledge. Dr. Pal, there is a question for you from Mr. Rudra. What is the lifespan of SCA2 patients? I think आपने थोड़ा सा लाइट डाला था उसके ऊपर. Can you be a little bit more specific for this question? I think Dr. Gupta, Dr. Gupta, can you hear me? Yeah, thank you. Maybe after 15 minutes I have to leave. I have already told. So 6:30 I'll be here till 6:30. About the lifespan, I do not want to introduce or discuss this issue here because it depends on many factors in spinal ataxia. As I already told that it is a disease and it depends on the number of repeat lengths, the severity of the disease. And and plus also how good the patient has been taken care, prevention of falls, prevention of pneumonia, all these many other factors are there. SCA by itself does not kill a patient, okay? And lifespan, so there are many factors. Both factors hota hai, usko kitna din koi kehega ki nahi. So that is, I think, better not to discuss. But it depends. Some part definitely, as Dr. Verma has also pointed out, that the repeat lengths will determine the severity of the disease. Not the main, I cannot tell about the lifespan, but the severity of the disease. Some of the diseases like Friedreich's ataxia can have a cardiac problem, cardiac involvement. In general, in the spinal ataxia, there is no specific cardiac involvement. But I want to highlight one or two things. We are talking about spinal ataxia as the adult onset. But
you know, the rare disease organization like we have formed in with Faruq, Achal, myself, we have all looking after a rare disease consortium in India, especially catering the movement disorders. जो ataxia is one of the main thing. So ये क्या होता है India में, especially in southern India, there are a lot of consanguinity. मतलब 45 to 48% rate of consanguinity means parents are relative, blood relatives, and this propagates the autosomal recessive disorders. So हम लोग बहुत cases देखते हैं जो बचपन में ataxia हुआ है, ataxia telangiectasia, ataxia oculomotor apraxia, many other ataxias, including Friedreich's ataxia. So after diagnosis, if you know that there is autosomal recessive, we should try to prevent the next generation from propagating that ataxia. It is preventable. You or शादी करना नहीं अपना रिश्तेदार के अंदर, it is better not to marry so that autosomal recessive disorders does not carry forward in the next generation. Definitely but autosomal dominant is sure, but our दूसरा टाइप का ट्रीटमेंट है, हम लोग बहुत देखता है ataxia telangiectasia. ये बीमारी starts around 3rd or 4th year of life. Patient ataxic होता है, plus बहुत खांसी बीमारी होता है, large propensity to develop infections, plus इसके malignancy के भी बहुत chance होता है. So these patients can be, treated, at least prevented from all those malignancy and the infections by regular screening. ये बहुत important है patients of ataxia telangiectasia को. Recently हम लोग एक trial किया है, Dr. Achal बोला था, and trial was quite successful. Probably the information will come out in a year or so about the treatment of ataxia telangiectasia.